Prime Minister Narendra Modi stressed that the SCO remains a key platform to strengthen security and improve connectivity, while also unlocking opportunities for mutual growth. While Russian President Vladimir Putin underlined the SCO's pivotal role in shaping a new Eurasian order. He stressed that SCO has a meaningful input in strengthening the atmosphere of cooperation and mutual trust in the whole of Eurasia. भारत की सोच और नीति तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है। SCO, S security, C connectivity, O opportunity। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। And of course, the SCO makes a tangible contribution to strengthening the atmosphere of cooperation and mutual trust across the entire Eurasian continent, thereby helping to lay the political and socio-economic foundations for the formation of a new system of stability, security, and peaceful development in Eurasia. A system that would replace the outdated Eurocentric and Euro-Atlantic models, take into account the interests of the widest possible range of countries, be truly balanced, and therefore would not allow attempts by some states to ensure their own security at the expense of others. Touching on security, Prime Minister Modi referred to the recent terror attack in India and called for united action, stressing that extremism remains the biggest threat to regional peace. भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी President Donald Trump has warned डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। Chinese President Xi Jinping focused on global trade and governance, underscoring their efforts for genuine multilateralism and fairness in international affairs. We actively promote a correct and comprehensive view of the history of World War II, and we firmly oppose the Cold War mentality, any form of bloc confrontation, and all acts of bullying and coercion. We safeguard the international system with the United Nations at its core, and support the multilateral trading system with the World Trade Organization at its center. We advocate for a multipolar world that is equal and orderly, and for economic globalization that is inclusive and beneficial to all. We promote the building of a more just and reasonable global governance system, peace and stability. At this, Prime Minister Narendra Modi struck a clear note of caution. He reminded member states that all projects must respect sovereignty and territorial integrity, a principle enshrined in the SCO Charter. हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही SCO चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। Connectivity that bypasses sovereignty, losing trust and meaning.
At the trade front, Xi also announced new economic support measures, pledging 100 livelihood projects, $280 million in grants this year, and another $1.4 billion in loans over the next 3 years. China plans to implement 100 small yet impactful livelihood projects in member countries in need and will provide 2 billion yuan in grant aid to member countries within this year. In the upcoming years, specifically for the esteemed members of the prominent banking consortium, the individual member banks within this alliance will collectively proceed to issue a substantial and additional sum of 10 billion yuan in new loans. The total number of China-Europe freight train trips has exceeded 110,000. Fourth, we uphold fairness and justice. Meanwhile, India also earned points during the bilateral talks with Russia. President Putin highlighted that the cooperation among the two countries continues to grow, not just at the summit, but across platforms like the United Nations and BRICS. He added that relations within the bloc are built on trust and development, not politics. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है. Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान-प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं. ООН, БРИКС, группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इस गठन में से शामिल हैं. И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं. इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है. लोग हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं. Спасибо. धन्यवाद. आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है. बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है. इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं. एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. At the Shanghai Cooperation Organization Summit in Tianjin, Prime Minister Narendra Modi strategically showcased India's independent foreign policy. He subtly signaled to Trump India's options beyond American approval, firmly warned Pakistan on terrorism, and reminded China that cooperation doesn't equate to accepting projects undermining sovereignty.